Welcome to the plus 2 second year arts economic students. In previous class, theory of demand were discussed, the various points, law of demand, definition, meaning, assumptions, explanations, demand schedule, demand curve are covered. Now, we discuss about exceptions to law of demand or limitations to law of demand, in which field the law of demand is not applicable. केउं क्षेत्र रे चाहिदा सूत्रर व्यतिक्रम होता है. We will go through the various points. Number one, given goods. Given goods are special kind of inferior goods in which law of demand fails to operate. As price falls, real income of the consumer increases. So, quantity demanded of inferior goods falls and superior goods increases. Inferior goods होची निकृष्ट द्रव्य जो क्षेत्र रे चाहिदा सूत्रर व्यतिक्रम घटी थाए. कारण जेतेबेले कौन सी द्रव्यर दर ह्रास पाए सही द्रव्यर चाहिदा वृद्धि घटे, किंतु ए क्षेत्र रे व्यतिक्रम घटी थाए. जेतेबेले दर ह्रास पाए चाहिदा मध्य ह्रास पाए. कारण निकृष्ट द्रव्य क्षेत्र रे जदि दर कमिला तेबे उपभोक्तांगर वास्तव आय वृद्धि पाइब. तेणु से वर्धित आय रे से उत्कृष्ट द्रव्य किणवाकू पसंद करिवो. तेणु ए क्षेत्र रे चाहिदा सूत्रर व्यतिक्रम घटी थाए. ठीक रिवर्स इज द सेम. यार विपरीत पूरा ठीक. जेतेबेले कौन सी द्रव्यर दर वृद्धि पाए सही द्रव्यर चाहिदा मध्य वृद्धि घटे. ए क्षेत्र रे चाहिदा रेखार आकृति ऊर्ध्वगामी. सो लॉ ऑफ डिमांड इज फेल्स टू ऑपरेट. सो we will show it in the diagram. What is the shape of the demand curve in case of Giffen goods? Giffen means so Sir Robert Giffen, economist of Ireland, has stated this example. This is the shape of the demand curve in case of Giffen goods. So, the law is not applicable because the both variables demand and price move in the same direction. So, in such a case law fails to operate. ए क्षेत्र रे चाहिदा सूत्र कार्य करे नहीं. तो one of the example Giffen goods, one of the jowar, bajra are the special kind of inferior goods, jaw, bajra. So these are the inferior goods in which the law of demand is not applicable because as price falls, its demand falls. As price rises, its demand rises. So second point we go, that is the prestigious goods. In prestigious goods, सम्मान वृद्धिकारी द्रव्य क्षेत्र में मध्य चाहिदा सूत्रर व्यतिक्रम घटे. This law is not applicable in case of prestigious goods. The consumption of these goods shows the prestige value of the consumer. So जड़े उपभोक्तार प्रेस्टिज वैल्यू केतले बढ़े जतेबेले तार से द्रव्यर दामटा बढ़े. So this concept has been developed by Sir Veblen, an economist. She has written the prestigious goods fails to, in case of prestige goods the law is not applicable. Higher is the price, greater is the prestige value of the commodity and vice versa. तो जो द्रव्यर प्रेस्टिज वैल्यू अधिक अच्छी तार प्राइस बढ़ले मध्य तार चाहिदा वृद्धि पाइब. जो प्रेस्टिज वैल्यू कमिजिब तार दर कमिले मध्य तार चाहिदा मध्य कमिब. तेणु ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो धारणाटा
किए देखते वेबलेन जड़े इकोनॉमिस्ट से कहते चाहिदा सूत्र ए क्षेत्र में कार्य करे ना कारण बोथ वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन प्राइस आउ डिमांड गोटे दिगरे गति करछंती लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस दैट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड दर और चाहिदा मध्य विपरीत संपर्क उभय परस्पर विपरीत दिगरे गति करते तेणु चाहिदा सूत्र विपरीत दिग माने मूव इन द opposite direction here माने in case of prestige goods both variables move in the same direction एक दिगरे गति करछंती दर बढ़िले चाहिदा बढ़िबो दर कमिले चाहिदा कमिबो तेणु ए क्षेत्र में चाहिदा सूत्र कार्य करे नाही ये जो प्रेस्टीज गुड्स एग्जांपल होची डायमंड देन गोल्ड ऑर्नामेंट्स लग्जरियस कार all are the माने प्रेस्टीज गुड्स so that can increase the prestige value of a consumer. So as price of these goods increases, its prestige value will also increase with an increase in demand and vice versa. Reverse is the same. तो जिते प्रेस्टीज वैल्यू कमी जाऊँगी जो प्राइस यार कमुची तेणु ए क्षेत्र में चाहिदा सूत्रर व्यतिक्रम घटे. नेक्स्ट पॉइंट को जीवा में दैट इज फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस. सो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस भविष्यत दरर प्रत्याशा भविष्यत दर अनुसार मध्य चाहिदा सूत्रर व्यतिक्रम परिलक्षित होता है. द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट in case of future price expectations. During the period of rising price trend, people demand more goods because people expect that price of these goods will rise further. कथा होची जेते बेले कौन सी द्रव्यर दाम क्रमागत भाव में वृद्धि पाउ थाए तेबे उपभोक्ता अधिक दाम रे अधिक क्रय करिया को चेष्टा करे कारण सेतरे से अधिक माने बेनिफिट पाइबो कारण जदि दर माने पुणी भविष्य आउरी बढ़ी जाए पारे तेणु से दृष्टि को आखिया रखी से कम जिनस किणिबो नाही से अधिक जिनस किणिबो कारण भविष्य से ही माने गुड्स रो दाम आउरी बढ़ी जाए पारे. सो माने इन एंटिसिपेशन ऑफ द प्राइस ऑफ दिज गुड्स पीपल डिमांड मोर गुड्स एट हायर प्राइस. अधिक दर रे अधिक किणवा को उपभोक्ता माने पसंद करती. ठीक से परी विपरीत अर्थ से ऑन द कंट्रारी पीपल डिमांड लेस गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल इन फ्यूचर. भविष्य रे जदि कौन सी द्रव्यर ह्रास होबार अनुमान करा जाए तेबे उपभोक्ता कम दर रे कम किणा को पसंद करे कारण सही द्रव्यर दाम भविष्य रे पुनर्बार खसी जीवार संभावना थाए तेणु से कम दाम रे जदि कम किणुची ताहले से लाभवान होबो कारण जदि अधिक किणिबो से क्षतिग्रस्त होबो तेणु सेतिपाई से कम दाम रे कम किणले भविष्य द्रव्यर दाम आहुरी कमी जाई पारे. सो विथ एंटिसिपेशन ऑफ माने इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस so consumers demand also changes. So in such a case law is not applicable. Law of demand is not applicable because of this concept. तेणु ए क्षेत्र मध्य चाहिदा सूत्रर व्यतिक्रम घटे. नेक्स्ट वी गो थ्रू एसेंशियल गुड्स. सो एसेंशियल गुड्स जो अपरिहार्य द्रव्य अति आवश्यक द्रव्य. सो in such a case law of demand is not applicable because there are some goods like salt, life-saving drugs, etc. These are indispensable goods in which the law of demand will not operate because demand will not fall even though its price rises. Price बढ़िले मध्य दर बढ़िले मध्य उपभोक्ता से तार डिमांड कमी पारिबो नाही जेहेतु तार एटा होची बेयर नेसेसिटीज तार निहाती आवश्यक दर बढ़िले मध्य से किणिबो तेणु इन सच ए केस द लॉ इज नॉट एप्लिकेबल. ए क्षेत्र में चाहिदा सूत्रर व्यतिक्रम घटिता है. सो दीज आर द 4 points we discussed about
in which law of demand is not applicable. এই চাରୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାହିଦା ସୂତ୍ରର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ. Now next is why does demand curve slope downwards? There is another question. Demand curve जो चाहिदा रेखा कहीं निम्नगामी हुए. A normal demand curve always slopes downwards from left to right, because as people buy more of goods and services at lower price and less at a higher price. So this is the concept of the law of demand. So law of demand expresses an inverse relationship between price and demand. दर और चाहिदा मध्य विपरीतमुखी संपर्क. कौन सी द्रव्यर दर वृद्धि पाइले उपभोक्ता चाहिदार परिमाण ह्रास पाए, अन्य पक्षरे द्रव्यर दर ह्रास पाइले चाहिदार परिमाण वृद्धि पाए. So generally the normal demand curve slopes downward from left to right. Now we draw a normal demand curve in the figure diagram. Normal demand curve. Here is D is the normal demand curve. So it is slopes downward from left to right. At OP price, consumer demand OQ. When price rises from OP to OP1, quantity demanded decreases from OQ to OQ1. Similarly, when price falls from OP to OP2, quantity demanded increases from OQ to OQ2. अर्थात जितेबाला कौन सी द्रव्यर दाम वृद्धि पाउची, अर्थात ओपी जो दर बढ़ुची ओपी रु OP1 को, तेबे चाहिदार परिमाण कमुची OQ रु OQ1 को. सेहीपरि जिते द्रव्यर दाम ह्रास पाउची OP रु OP2 को, चाहिदार परिमाण वृद्धि पाउची OQ रु OQ2. So this is the normal demand curve. So normal demand curve always slopes downward from left to right. So now we will give you the example. So people demanded less potatoes as price of potato increases and vice versa. So I will show in the table. Table here is table. So here is the price of potatoes, price of potatoes in rupees, quantity demanded in kilogram. So here now we take an example. Suppose price 10, 15, 20, 25, then 30. So now price increases. So demand decreases 5, 4, then come to 3, 2, 1. So we observe from this table that when price increases, quantity demanded decreases. जेतेबेले पोटाटो दर बढ़ुची सेतेबेले यार चाहिदा कमुची. From we observe from the bottom, तलु आमे जदि आमे निरीक्षण करिबा तेबे जदि पोटाटो दर कमुची then पोटाटो चाहिदा बढ़ुची. So एथरु आमे स्पष्ट होचे जे द्रव्यर दर
एवं द्रव्य चाहिदा मध्य विपरीतमुखी संपर्क से चाहिदा रेखा सर्वदा बामरू दक्षिण को निम्नगामी तो देर आर सेवरल reasons why law of the demand curve slows downward from left to right. So, number one is the operation of law of diminishing marginal utility. Number one होची क्रमह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्रर प्रभाव क्रमह्रासमान सीमांत उपयोगिता प्रभाव अर्थ होची जदि कंज्यूमर कौन होची द कंज्यूमर परचेजेस मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी as its price falls and the marginal utility derived from the additional unit of the commodity consumed decreases. जेतेबेले कौन सी द्रव्यर दाम ह्रास पाए सेतेबेले उपभोक्ता अतिरिक्त द्रव्य मिलुथिबा सीमांत उपयोगिता ह्रास घटे जी से पाउथिबो ताठू कम पाइबो तार यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी कमिबो दर कमिले तार यूटिलिटी कमिबो तेणु जेतेबेले कौन करिवो ना से द्रव्य से कम किणव दर कमिले मध्य से कम किणव कारण तार यूटिलिटी एडिशनल अतिरिक्त एकक मिलुथिबा सीमांत उपयोगिता क्रमशः कमी जीवो तेणु से जी तार रियल इनकमटा बढ़ला से ताको अन्य क्षेत्र में खर्च कर तार तो तार अन्य द्रव्य से खर्च कले तार अधिक यूटिलिटी पाइबो तेणु ए क्षेत्र में माने कौन हो माने चाहिदा सूत्रर माने कार्यकारी होची सो law of demand slopes downward that we mean that consumer demands more units of the commodity as its price falls. So when price falls जब तार दर कमी जाऊँगी तार रियल इनकम बढ़ुची तो रियल इनकम बढ़ले से कौन करिवो ना से अधिक जिनस अन्य द्रव्य किणव तार मार्जिनल यूटिलिटी बढ़िबो अन्य द्रव्य किंतु से निर्दिष्ट द्रव्य तार कमी जीवो यूटिलिटी सो इन दिस केस द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम टू लेफ्ट टू राइट क्रमह्रासमान सीमांत उपयोगिता प्रभाव फल चाहिदा रेखा बामरू निम्नगामी होता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इनकम इफेक्ट. तो इनकम इफेक्ट आयर प्रभाव जो चाहिदा रेखा बामरू दक्षिण को निम्नगामी होता है. एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स द कंज्यूमर्स रियल इनकम increases. So more of the other commodity is purchased. कारण जत्तिकी तार कौन सी द्रव्य दर कमिला तार वास्तव आय बढ़िबो से जत्तिकी टंकार जिनस किणुथिला सेति टंकार से जिनस किणिबो आउ वर्धित जो आय बढ़िला सी अन्य द्रव्य किणिबो ताले तार इनवर्स रिलेशनशिप रहिला दर एवं चाहिदा भितर इनवर्स रिलेशनशिप रहिला तेणु ए क्षेत्र में चाहिदा रेखा बामरू दक्षिण को निम्नगामी होता है. नेक्स्ट चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स. उपभोक्तांकर संख्या बा क्रेता मानकर संख्या वृद्धि. विथ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी द कंज्यूमर विल बी विलिंग टू परचेज मोर हु हैव नो एबिलिटी टू परचेज अर्लियर. जेतेबेले कौन सी द्रव्यर दर परिवर्तन हुए सेतेबेले जो उपभोक्ता पूर्वर किणी पार नथिबे तांकर द्रव्य किणा प्रति आग्रह सृष्टि हेबो. सपोज कौन सी द्रव्यर दर माने कमिला खसिला ताले कौन हेबो उपभोक्ता जो मानकर एबिलिटी नथिला तार क्षमता नथिला क्रय करिया शक्ति नथिला से एबे तांकर क्रय करिया पई आग्रह सृष्टि हेबो जेतु दर कमिला तेणु से द्रव्य से किणा पई आग्रह हेबो एवं पूर्वर जो माने किणुथिले से माने मध्ये किणिबे. तेणु यह द्वारा द एक्जिस्टिंग कंज्यूमर विल नो डाउट परचेज मोर. एज ए रिजल्ट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तेणु एथिपाई चाहिदा रेखा बामरू दक्षिण को निम्नगामी होता है. देन कम टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. प्रतिस्थापक द्रव्यर प्रभाव. प्रतिस्थापक द्रव्यर प्रभाव when price of the commodity falls, other things remaining constant, the commodity becomes cheaper in comparison to other commodity. So the consumer will purchase more and less of other commodity and vice versa. जेतल दुईटी द्रव्य प्रतिस्थापक गोटे द्रव्य बदल आउ गोटे द्रव्य तले आमे उपभोग करूँ सेतेबेले दर मध्य यार प्रभावित होता है.
जदि मनकर एग्जांपल निया जाई पारे टी एंड कॉफी चा और कॉफी दुईटी परस्पर प्रतिस्थापक द्रव्य जदि चार दर वृद्धि पाइला लोक माने चा कम डिमांड करेंगे एवं अधिक कॉफी चाहिए पीपुल डिमांड मोर कॉफी एंड लेस टी तो दिस इज द रिवर्स ठीक है जदि मनकर चार रेटा कमिगला चार दरटा कमिला लोक चा अधिक पीबे आउ कॉफी कम पीबे तेणु ए क्षेत्र में नेगेटिव रिलेशनशिप रोचे बा आंक भितर दुईटी विपरीतमुखी संपर्क रोचे से चाहिदा रेखा बामरु दक्षिण को निम्नगामी होता है। नेक्स्ट we'll discuss about the change in demand, change in quantity demanded. Now change in demand, change in quantity demanded. Change in demand and change in quantity demanded. चाहिदार परिवर्तन और चाहिदार परिमाणर परिवर्तन चाहिदार परिवर्तन अर्थ कौन व्हेन माने चेंज इन डिमांड वी मीन व्हेन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी अदर फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कौन सी द्रव्यर चाहिदा दर को छाड़ी अन्य उपादान द्वारा प्रभावित होतिबा जगु चाहिदार परिवर्तन हुए अन्य उपादान कौन What are the other factors? तो other factors are change in income, आयर परिवर्तन, taste, preferences, price of related goods, climatic condition, state policy, population. ये होची कोन अन्यान्य उपादान आय परिवर्तन हेले चाहिदार परिवर्तन हबो टेस्ट परिवर्तन हेले चाहिदार परिवर्तन हबो प्रिफरेंस प्राइस रो मध्य रिलेटेड गुड्स सच एज कॉम्प्लीमेंटरी एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स परिपूरक बा अनुपूरक द्रव्य बा प्रतिथा द्रव्य रो प्रभाव रे मध्य चाहिदा परिवर्तन होता है क्लाइमेटिक कंडीशन क्लाइमेट कौन जोट आमर जलवायु अनुसार मध्य आमर चाहिदा प्रभावित होता है स्टेट पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक टैक्स पॉलिसी जो आम कहे कर नीति जो आमर चाहिदा प्रभावित हुए पॉपुलेशन कहले जनसंख्या द्वारा मध्य चाहिदा प्रभावित होता है तेणु ये सब दर को छाड़ी दर व्यतीत यही उपादान जदि परिवर्तन हुए तेबे चाहिदार परिवर्तन हम तो चाहिदार परिवर्तन दर को छाड़ी दर व्यतीत अन्य उपादान परिवर्तन फल चाहिदार परिवर्तन होता है। तो अनदर वन इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड चाहिदा परिमाणर परिवर्तन होची इट मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अराइजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट अन्यान्य उपादान को अपरिवर्तित रखी जदि द्रव्यर दरर परिवर्तन हुए तेबे चाहिदार मध्य परिवर्तन हबो अन्यान्य उपादान यथा आय परिवर्तन रुचि अभ्यास परिवर्तन फैशन परिवर्तन रिलेटेड गुड्स परिवर्तन जोड़िक संपर्कित द्रव्यर दाम परिवर्तन जलवायु परिवर्तन सरकार कर नीतिर परिवर्तन जनसंख्यार परिवर्तन ये सब परिवर्तन जो होची ताकू स्थिर रखी जदि द्रव्यर दाम वृद्धि पाए चाहिदार परिमाण ह्रास पाइब।
एवं दर ह्रास पाइले चाहिदार परिमाण वृद्धि पाइब। यह कह चाहिदा परिमाणर परिवर्तन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड arises due to change in its own price keeping other factors remaining constant. So, we will discuss about the change in demand. Change in demand, so it may increase in demand or decrease in demand. So, due to other factors. So, I will show in a diagram. So, here is the price. OX axis measures quantity demanded. OX अक्षरे चाहिदार परिमाण दर्शाई. OY axis measures price. OY अक्षरे दर दर्शाई. तो here is demand, normal demand curve. D is the demand curve. Due to change in other factors keeping price remaining constant. So, demand curve may shift rightward, may also shift to the leftward. चाहिदा रेखा स्थानांतरित हुए, चाहिदा रेखा दक्षिण को स्थानांतरित हेले चाहिदा वृद्धि पाए, चाहिदा रेखा वाम को स्थानांतरित हेले चाहिदा ह्रास पाए. So, now we draw a perpendicular line OQ, OQ1, OQ2. Here is the price. Here price is remaining constant. दर ये अपरिवर्तित रही. अन्य उपादान परिवर्तन फल चाहिदार मध्य परिवर्तन घटुची. तो ये हूँ ओरिजिनल डिमांड कर्व डी, मूल चाहिदा रेखा डी. जिते बड़े अन्य उपादान वृद्धि घटे दर स्थिर रहा तेबे चाहिदा रेखा दक्षिण को स्थानांतरित हो. द डिमांड कर्व मे शिफ्ट राइटवर्ड. सो राइटवर्ड शिफ्ट मीन्स increase in demand. Demand increases from OQ to OQ2. Here we can say increase in demand. Increase in demand. चाहिदार वृद्धि. So suppose other factors may decrease. अन्य उपादान जोड़ी अच्छी आम कर सरकार कर नीति जनसंख्या then come to other factors are that is taste, preferences, price of related goods, climatic condition. So if these factors decrease, then the demand decreases from OQ to OQ1, keeping price remaining constant, that is OP. So now decrease in demand, leftward shift, that is a decrease in demand. तो डिक्रिज इन डिमांड चाहिदार ह्रास किपरि घटुची जदि अन्य उपादान जदि ह्रास घटे. अन्य उपादान कहले आय, रुचि, अभ्यास, जो फैशन, अन्य द्रव्यर दर, क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु परिवर्तन, सरकार कर नीति, जनसंख्या इत्यादि जदि परिवर्तन हुए तेबे चाहिदा रेखा परिवर्तन घटिबो. जदि चाहिदा रेखा दक्षिण को स्थानांतरित हुए तेबे चाहिदा वृद्धि पाइबो. जदि चाहिदा रेखा वाम को स्थानांतरित हुए चाहिदा ह्रास पाइबो. सो द डिमांड कर्व मे शिफ्ट टू द राइटवर्ड, मे also shift to the leftward. Rightward shift demand curve we mean increase in demand, leftward shift of demand curve may mean the decrease in demand. So decrease in demand and increase in demand we discuss in detail with a separate diagram. So now increase in demand,
and with the help of the table and a diagram. Increase in demand, increase in demand, চাহিদার বৃদ্ধি. It refers to rise in demand of a commodity causes due to change in favorable factors other than its own price. तो ये होची जदि चाहिदार वृद्धि घटे दर को स्थिर रखी जदि अन्य उपादान रो अनुकूल प्रभाव पड़े बा तार फेवरेबल इफेक्ट पड़े तेबे चाहिदा रेखा दक्षिण को स्थानांतर हेबो. आम देखा टेबुल और डायग्राम कर देख बुझेबा. टेबुल हियर इज प्राइस इन रुपीस, क्वांटिटी डिमांडेड in units. So here is a price 20, price will not change, दर स्थिर रही. चाहिदा बढ़ला 50, then come to 100. Here at rupees price 20 per unit, the consumer demands 50 units of a particular commodity. When price with the same price, the quantity demanded increases from 50 units to 100 units. So here दर स्थिर रहुची चाहिदार परिमाण वृद्धि पाउची. जब दर स्थिर रहुची चाहिदार परिमाण वृद्धि पाउची तेबे चाहिदा रेखा स्थानांतरित हेबो. चाहिदा रेखा दक्षिण को स्थानांतरित हेबो. तार अर्थ चाहिदा परिमाण वृद्धि पाइबो. So we show it in the diagram. Quantity demanded. Here is the price. Here at price rupees 20 per unit, the consumer purchases 50 units. With the same price, the consumer may also purchase 100 units due to increase and favorable effects of other factors. अन्यान्य उपादानर प्रभाव जोगु चाहिदा रेखा दक्षिण को स्थानांतरित होछि, जहाँद्वारा कि चाहिदा रेखा मूल चाहिदा रेखा डी तापरे ये जो माने अन्य उपादान परिवर्तन फल चाहिदा रेखा दक्षिण को स्थानांतरित होछि. इट शिफ्ट्स फ्रॉम राइटवर्ड, फ्रॉम लेफ्टवर्ड टू राइटवर्ड, फ्रॉम डी टू D1 अर्थात चाहिदार परिमाण वृद्धि पाइला ड्यू टू अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट. दर स्थिर अच्छी तर आमर आय बढ़ला तो आम अधिक किणवा, जो जनसंख्या बढ़ला ताले आम अधिक किणवा किंबा आमर टेस्ट प्रिफरेंस चेंज है आम भल जिनस कि पसंद कले ताले दर मध्य शेयर रहा आम अधिक किणवा. सो दिस इज इंक्रीज इन डिमांड. सो नाउ नेक्स्ट कम टू डिक्रीज इन डिमांड. Decrease in demand, it refers to fall in demand of a commodity causes due to change in unfavorable factors other than its own price. अन्यान्य उपादानर जदि ह्रास घटे अनफेवरेबल इफेक्ट तेबे आमर चाहिदार परिमाण मध्य ह्रास घटिबो, चाहिदार परिमाण मध्य ह्रास घटिबो. तेणु चाहिदा रेखा बाम को स्थानांतरित हेबो.
माने the demand curve may shift to the leftward. So, leftward shift of the demand curve we call it as decrease in demand. ଯେତେବେଳେ ଚାହିଦା ରେଖା ବାମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୁଏ ଆମେ କହିବା ଏହା ହେଉଛି ଚାହିଦାର ହ୍ରାସ। ତ ଚାହିଦାର ହ୍ରାସ ଆମେ ଟେବୁଲ ଦେଖେଇବା। Decrease in demand. ଚାହିଦାର ହ୍ରାସ। ଚାହିଦାର ହ୍ରାସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଦାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଦର ସ୍ଥିର ରହୁଛି। ଦର ସ୍ଥିର ରହି ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନର ହ୍ରାସ ଘଟେ ତେବେ ଚାହିଦାର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟେବୁଲ। Here is the price in rupees 20, same price, quantity demanded, in units. Here is the 100, 50. द्रव्यर दर गोटे यूनिट प्रति जदि 20 टंकार थिला आमे 100 यूनिट किणुथिले केते 100 यूनिट्स बर्तमान सही द्रव्यर दर रहिला से 20 यूनिट्स आमर चाहिदा कमी गला माने 100 रु 50 गला काहे कि ना आमर जो अभ्यास जो आमर रुचि आग्रह ए सब आमर परिवर्तन हला कारण आमर कमी गला आमर आय कमी गला अन्यान्य संपर्कित द्रव्य दर जितेबले स्थिर रोचे तेणुक ये हूँ जो गोटे द्रव्यर माने गोटे उपादान परिवर्तन होते चाहिदा परिवर्तन हो अनफेवरेबल फैक्टर प्रतिकूल प्रभाव पड़ुछि जदि उपादान प्रतिकूल प्रभाव पड़ा कंज्यूमर उपर तेबे चाहिदार ह्रास घट चाहिदार ह्रास घटले डिमांड कर्वटा कौन हम ना लेफ्टवर्ड शिफ्ट हम डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड अर्थ होची बाम प्रति को स्थानांतरित हम quantity demanded, here is the price. OQ, OQ2, OP. it होची मूल चाहिदा रेखा ओरिजिनल डिमांड कर्व DD. Original demand curve DD slope down from left to right. So, due to decrease in demand with the constant price, demand curve shift to the leftward. D2 the new demand curve. D2 the new demand curve, it is shift to the leftward. It mean demand decreases from OQ to OQ2 with the same price. दर स्थिर रहिला किंतु चाहिदार परिमाण कमिला चाहिदार परिमाण कमिबार अर्थ होची अन्यान्य उपादान ह्रास घटिला ये जनसंख्या कमिला ये आमर आय कमिला आम रुचि एवं आमर पसंद मध्य कमिला जलवायुर मध्य परिवर्तन हला तेणु एथिपाई चाहिदार परिमाण ह्रास पाइला चाहिदार परिमाण ह्रास पाइबा फल चाहिदा रेखा बाम को स्थानांतरित हला सो डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्टवर्ड we mean it as decrease in demand. So, decrease in demand means due to unfavorable factors other than its own price. दर को छाड़ी
अन्य उपादान रो परिवर्तन फल चाहिदा रेखा बाम को स्थानांतरित होची सेथिपाई चाहिदा रो ह्रास घटुची। तो नेक्स्ट change in quantity demanded. Change in quantity demanded means keeping other factors remaining constant, keeping other factors remaining constant, अन्य उपादान स्थिर रही जदि द्रव्यर दाम रो परिवर्तन हेबो तेबे चाहिदार परिवर्तन हेबो। तो keeping other factors remaining constant, when price changes quantity demanded also changes. When quantity demanded of a commodity changes due to change in its own price, keeping other factors remaining constant. So, other factors that we have already told you, that is a change in income of the consumer, then come to taste and preferences, then price of related goods, state policy, then come to weather conditions. So, these are the factors that should remain constant. यही उपादान जदि स्थिर रहिबो, जदि द्रव्यर दर रो परिवर्तन हेबो तेबे चाहिदार मध्य परिवर्तन घटिबो। तेणु हियर इज ए मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। गोटे डिमांड कर्व मूवमेंट चाहिदा रेखार गति परिवर्तन, गोटे गति रु अन्य गति, गति मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू another along the same demand curve. It is called change in quantity demanded. Now, change in quantity demanded is to be explained with the table and also in the diagram. चाहिदा परिमाणर परिवर्तन, चाहिदा परिमाणर परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. सो चाहिदा परिमाणर परिवर्तन कहले जदि द्रव्यर दर रो परिवर्तन हुए चाहिदा परिमाण परिवर्तन हेबो जदि अन्य उपादान स्थिर रहे. तेणु अन्य उपादान जोड़ के आम कहे जनसंख्या, आय, उपभोक्ता आय, रुचि पसंद, जलवायु, सरकार करनीति इत्यादि. तेणु एसबूर स्थिर रही जदि द्रव्यर दर वृद्धि पाए तेबे चाहिदार परिमाण ह्रास हेबो, द्रव्य दर ह्रास हेले चाहिदार परिमाण वृद्धि हेबो. लेट अस सी इन द टेबल. Price in rupees, quantity demanded in units, okay, then 10, 15, then 5, 100, 80, then come to 90. जेतेबेले द्रव्य दर गोटे एक प्रति 15 टंका अच्छी तेबे उपभोक्ता 80 यूनिट्स किणुची, 80 यूनिट्स किणुची. जेतेबेले द्रव्य दर ह्रास पाउची, द्रव्य दर 15 टंका रु 5 टंका ह्रास पाउची तेबे चाहिदार परिमाण 80 यूनिट रु 90 यूनिट्स वृद्धि पाउची. सेहीपरि जेतेबेले द्रव्यर दर वृद्धि पाउची सेतेबेले चाहिदार परिमाण ह्रास पाउची. देख द्रव्यर दर 10 टंका थिला से जेतेबेले दर बढ़िला 15 टंका हेगला सेतेबेले चाहिदा परिमाण कमिला 100 रु 80 यूनिट्स हैला. अर्थात जेतेबेले द्रव्यर दर ह्रास पाउची सेतेबेले चाहिदार परिमाण वृद्धि पाउची. व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम रुपीज 15 per unit to 5 per unit, quantity demanded increases from 80 units to 90 units. On the contrary, when price rises from rupees 10 per units to 15 per units,
quantity demanded decreases from 100 units to 80 units. So, this shows an inverse relationship to the law of demand. Inverse relationship means it expresses law of demand. So, law of demand explains the inverse relationship between price and demand. Quantity demanded changes due to change in price other than its own price. So, now we will explain it in the diagram. So, that is the movement along the demand curve. X axis, y axis. Quantity demanded, here is the price. D is the demand curve. So, here D is the demand curve, D is the demand curve, it shows the downward sloping ବାମରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଦର ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି. It shows an inverse relationship between price and demand. When price rises, quantity demanded falls. On the contrary, when price falls, quantity demanded increases. When at OP at a price rupees 10 per unit, quantity demanded is 100 units. When price rises from rupees 10 to rupees 15, quantity demanded decreases from 100 units to 80 units. Similarly, when price falls from rupees 10 per unit to 5 per unit, quantity demanded increases from 80 to 90, 80 to 90. ताले एथुर स्पष्ट होची जेते दर कम होची सेते चाहिदा परिमाण वृद्धि घटुची. दर 5 टंका पर यूनिट हेला बेलू आमे 90 किणुचे, दर बढ़िला माने 10 टंका 15 टंका हेला हमर क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज कला 100 यूनिट रु 80 यूनिट्स हेला. सो इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. दर और चाहिदा परिमाण मध्य विपरीतमुखी संपर्क अर्थात जितेबाला द्रव्यर दर वृद्धि पाइब चाहिदार परिमाण ह्रास पाइब, सेहीपरि द्रव्यर दर ह्रास पाइले चाहिदार परिमाण वृद्धि पाइब. यह हूँ चाहिदा परिमाणर परिवर्तन. सो इट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. ई हूँ डिमांड कर्व गोटे पॉइंट जो पॉइंट रे कि आमे 10 टंका बेले आमे 100 यूनिट किणुथिले जेतेबेले ई रु ई1 पॉइंट को गति करछि ऊर्ध्वमुखी गति करछि बा अपवर्ड इनक्रीज करछि सेतेबेले हमर देख प्राइसटा बढ़ुछि 10 टंका रु 15 टंका होछि एवं चाहिदार परिमाण ह्रास घटुछि 100 रु 80 घटुछि. ऑन द कंट्रारी जेतेबेले चाहिदा बिंदुर परिवर्तन होछि ई रु ई2 होछि सेतेबेले दर कमुछि एवं चाहिदार परिमाण वृद्धि पाउछि. इट रिवील्स दैट the movement along the same demand curve. So, when the demand curve move upward, demand decreases, price increases. When the movement shows downward,
देन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस जिते बड़े ऊर्ध्वमुखी होची से चाहिदार परिमाण जिते चाहिदा रेखा ऊर्ध्वगामी गति होची से चाहिदार परिमाण ह्रास पाउची जिते चाहिदार गति निम्न आड़ी गति करुच्ची से चाहिदार परिमाण वृद्धि करुच्ची दिस इज अबाउट योर क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड change in price, change in demand. So, change in demand and change in quantity demanded are differentiated due to change in price and change in other factors. So, change in price we mean keeping other factors remaining constant. So, that is change in quantity demanded. It is दर परिवर्तन घटुची अन्य उत्पादन अपरिवर्तित घटुची या आम चाहिदा परिमाण परिवर्तन कहूचे सेहीपरि जितेबाला आम दर स्थिर होची अन्य उत्पादन परिवर्तन घटुची ताकू आम कहवा चाहिदार परिवर्तन दिस ऑल अबाउट योर चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आज आम चाहिदा सूत्र व्यतिक्रम पढ़ले चाहिदा सूत्र व्यतिक्रम अर्थात चाहिदा सूत्र केउ क्षेत्र कार्य करे नाही सेमती आम देखिले जे चाहिदा रेखा बामरू दक्षिण को निम्नगामी हुए कहीं तो वेरियस रीजन्स व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चाहिदा रेखा बामरू दक्षिण को निम्नगामी हुए कहीं तार मध्य कारण बुझिले एंड लास्टली डिफरेंशिएशन ऑफ चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो चाहिदार परिवर्तन और चाहिदार परिमाण परिवर्तन भितर differentiation पार्थक्य बुझिले so you should I think you should have better understood thank you to all.